हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बात करेंगे राजकोट में, जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था। राजकोट का थर्ड टेस्ट और फाइनली अ डेब्यू टू रिमेम्बर फॉर सरफराज खान। अ मच डिजर्विंग डेब्यू जो कट शॉर्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली एक रन आउट के साथ। 237 फॉर फोर थी इंडिया का स्कोर जब सरफराज आए थे बैटिंग करने, और जब वो आउट हुए तब टीम का स्कोर था 314 रन्स। मतलब कि 77 रन्स की पार्टनरशिप हुई और उसमें से सरफराज खान ने 62 रन्स मारे। इट वाज एन अमेजिंग काउंटर अटैक। उसके पहले रोहित शर्मा ने एक लेजर फोकस के साथ आज बैटिंग की, थोड़े लकी रहे बट एक अमेजिंग 100। और जडेजा, जिनको कोई भी बेसबॉल से कन्विंस नहीं कर सकता, उन्होंने अपने ही स्टाइल में बैटिंग की और उन्होंने भी एक 100 मारी, जिससे मैं श्योर हूँ टीम मैनेजमेंट बहुत खुश होगी, क्योंकि इंडिया एक इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप के साथ जा रही थी। उससे पहले 33 फॉर थ्री हो गई थी इंडिया। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा आज के सबसे बड़े हार्ट ब्रेक की। एक तो हार्टफुल मोमेंट की फाइनली सरफराज को डेब्यू मिला और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, इतना क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ खेले हैं सारे शॉट्स। मतलब मैंने जितना भी देखा, मतलब ही वॉज क्लियर कि क्या करना है और कौन से बॉल को अटैक करना है, कब स्वीप खेलना है, कब सामने खेलना है। लेकिन सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट देवांशु भाई आज रहेगा कि यू नो रोहित ने जो रिएक्शन दिया जब सरफराज रन आउट हुए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रोहित भी चाहते थे कि केएल राहुल पे दरवाजे बंद हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए टीम से बाहर चले जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। आपका क्या रिएक्शन है दिवांशु भाई? And I was shattered and I was like furious with Jadeja. लेकिन अब जडेजा को आप कुछ बोल नहीं सकते यार, बैट्समैन हैज मेड एन 100, ठीक है। हम्म। हम्म। एंड बट आई थिंक दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट एक्चुअली सरफराज वाज इन दैट रन मेकिंग जोन। उसको हर बॉल पे रन चाहिए था, तो हम्म। वो फ्लो में था एंड वो आउट हो गया उसके अंदर। बट हम्म। अगेन एज आई सेड, क्लैरिटी ऑफ थॉट जो थे उसकी शॉट मेकिंग में अमेजिंग। हम्म। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आई थिंक आज की सरफराज की इनिंग के बाद मैंने अपने ग्रुप चैट में भी बोला कि आई वांट टू सी सरफराज एंड पंत बैट एंड टेकिंग हम्म। ऑन नेथन लियोन। दैट विल बी एन अमेजिंग बैटल। मतलब हम्म। टॉप नॉच स्पिनर अगेंस्ट टू प्लेयर हु जस्ट डोमिनेट स्पिन। तो हम्म। इट विल बी फन इफ इट एक्चुअली हैपेंस। मैं तो आज चाहता था कि मैं रोहित और सरफराज को बैटिंग करना चाहता था, इसीलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था जब हाँ, जडेजा नंबर तो 5 पे आया। मुझे लगा वो थोड़ा इंडिया वहां पे, ठीक आई है आप बोल रहे सेड हो कि स्टेबिलिटी चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वहां पे डिफेंसिव हो गया, क्योंकि सरफराज भी पूरा काउंटर अटैक, क्योंकि वो रणजी में आता है ऐसे पोजीशंस में कि मुंबई जब 34-3 होती तो है और उसके बाद वो काउंटर अटैक करता है, तो मुझे लगा कि वहां पे थोड़ा डिफेंसिव आई हो डोंट गई। नो अबाउट फ्यूचर। हम्म। I don't know about future, but Rohit and Virat will love to play in partnership with the Sarfaraz. क्योंकि हम्म। सरफराज भी वैसा ही है, उसको वो हर बॉल पे रन लेना चाहते हैं। दे बोथ आर सिमिलर आल्सो। विराट की हम्म। स्कोर बोर्ड मूव होता रहा है, तो इवेंचुअली, बट हाँ, ये फर्स्ट इनिंग में हो गया, सेकंड इनिंग में सरफराज विल कम एट 4। ये तो हम्म। 100% श्योर है। वो है। अच्छा। और बहुत अमेजिंग आज का दिन था एक्चुअली। मैं तो पूरी तरह से बैक कर रहा था इस इंडियन टीम को। आई लव दिस इंडियन टीम, टू बी ऑनेस्ट। इसमें केएल नहीं है, इसमें श्रेयस अय्यर को भी बाहर कर दिया इन्होंने, और अभी केएस भरत को भी बाहर कर दिया। तो आई वॉज टोटली लविंग दिस, ऑल्दो आई लव श्रेयस अय्यर इन तीनों में से। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था कि इंडिया ने कुछ नया ट्राई किया और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ गए कि भाई हमारे ये प्लेयर्स हैं। और मैंने आपको बोला था देवांशु भाई, डेब्यू ठीक है, स्टोक्स 100 टेस्ट खेल रहे हैं बट डेब्यू में हमारे लड़के भी छाप छोड़ेंगे। और भाई क्या खेला है हम्म, सरफराज ने, और रोहित ने क्या बैटिंग की है। बहुत मजेदार दिन था आज, मतलब इंडिया ने ये जो कमबैक किया वो अमेजिंग था। मैं मुंबई बैट्समैनशिप का देख रहा था, तो रोहित मेड अ डेब्यू 100, हम्म। पृथ्वी शॉ डेब्यू हम्म। 100, आई थिंक जायसवाल मिस्ड अ डेब्यू जायसवाल 100, ऑल्सो मेड, जायसवाल एंड ऑल्सो यह मेड। था उसका डेब्यू 100। हाँ। अय्यर ऑल्सो, श्रेयस अय्यर हैज ऑल्सो मेड अ डेब्यू 100, ठीक है। हम्म। तो दिस वाज एन अमेजिंग चांस फॉर सरफराज ऑल्सो, बट हम्म। ओनली स्काई मिस्ड आउट। सो एक पूरा बैट्समैनशिप का था कि दे हम्म। एक्चुअली में
मुंबई बैट्समैन नोज हाउ टू मेक रन्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म आप टेस्ट क्रिकेट या किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आपको रन बनाने आने चाहिए, एंड दे नो हाउ टू डू इट। हम्म एंड ऑब्वियसली अभी एंड अगेन द सेम थिंग, आप किसी प्लेयर के वीडियोस देख सकते हो रणजी के या फिर मतलब आईपीएल के, बट वो टेस्ट क्रिकेट में कैसे खेलेगा ये ऑपोजिशन को भी नहीं पता है। तो देर हम्म इज नो प्लान। तो इसलिए आपको यंगस्टर्स को आपको मौके देते रहना चाहिए। नाउ अभी हम लोग इतने एक्साइटेड हैं सरफराज की बैटिंग देख के, वी डोंट नो व्हाट जुरेल विल डू जब उसकी Yeah, बैटिंग आएगी। I'm very किसी ने excited for that. सबने केवल उसको आईपीएल, उस हम्म सबने उसकी आईपीएल में बैटिंग देखी है, स्ट्रोक मेकिंग देखी है, इट्स गुड। बट वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या करता है, एवरेज एक तरफ हो जाती है, सब एक तरफ हो जाता है। हम्म बट अगर सपोज करिए वो आ रहा है व्हेन द स्कोर इज 350 360 फॉर 6, ठीक है, हम्म वो हम्म मारना स्टार्ट कर दिया उसने, मोमेंटम ही गेम का चेंज हो जाएगा पूरा। हम्म व्हाट डज दैट मीन? तो हम्म वेरी एक्साइटेड हम्म, एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी कि इंडिया वेंट विद कुलदीप यादव एंड नॉट अक्षर पटेल। yeah, प्राइमरी yeah. स्किल्स को उन्होंने फुल वो तब वो वेटेज दिया है दिया। प्रायोरिटी। एंड हम्म वो इस पिच पे हम्म जितना टर्न मेरे को उसका हु इज दैट लेग स्पिनर, इंग्लैंड लेग स्पिनर, रेहान रेहान अहमद। अहमद। रेहान अहमद रेहान अहमद को इतना टर्न मिल रहा था, वहां पे कुलदीप भी टर्न करेगा बॉल को। तो ये तो हो गई, इट्स अ गुड गुड सिलेक्शन। Yeah, and lucky toss win also. And और कुलदीप, Kuldeep may have to play other roles कुलदीप also. यादव Like पर है कुलदीप यादव ना, कुछ और भी रोल नाइट खेल सकता है चाइनामैन, कल मॉर्निंग। क्या आप बोल रहे होते उसको? नाइट चाइनामैन, नाइट चाइना मैन। नाइट चाइनामैन। Sure, what's your reaction to today's game? Obviously, going to ask you about Sarfaraz Khan, Jadeja, that drama that happened at Rajkot. Yeah, so nice background picture, Shikhar, Yeah, yeah. commemorating the success. But I just wanted to mention two people's name here. First, it will be Rohit Sharma, because मुझे आज realize हुआ कि रोहित शर्मा बहुत ही एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है. I cannot comment about his captaincy, but I can Hmm, comment that he really has that fire in him still ignited. मतलब वो hmm, बंदा करता है, hmm, and his century today was a testimony to that. hmm, सेकंड ऑब्वियसली सरफराज, सरफराज के स्ट्रगल के और इंतजार के कहानियां तो वो लोगों ने भी सुनी है जो क्रिकेट में पहले कम देखते थे. एग्जाम्पल मी. I mean, hmm, I've been listening about Sarfaraz before even I was so much interested in our like current cricket or abhi bhi. So a great day, and he showed that the wait was worth it, hmm, and I would be really happy if he gets more chances and hmm, play with like the way he has to, like as we know, like he's playing like an aggressive knock. Let him be like that. I hmm. mean, and maybe the vision of seeing him and Pant also, the dream Yeah, can come Devanshu true. भाई भी वही बोल रहे थे. But what's your reaction on the Yeah. run out? Actually, I thought I'll not talk anything about Jadeja because even Twitter is kind of like divided He has because apologized I to mean, Sarfaraz now. yeah, in this exactly. So in this short span of that run out to tell his apology, like ऐसा लग रहा है एक पूरी सदियां बीत गई type something, like it happened Hmm, all this thing. But hmm, I mean, Jadeja has been like very notorious for his runouts. कुछ लोग hmm, बोलेंगे कि क्रिकेट में ऐसा होता है, इट इज अ hmm, उसी मोमेंट में से हो जाता है, बट एक इंसान ओवर द ईयर इतना कैसे कर सकता है. आई लव द जडेजा हु वाज देयर. आई मीन, मुझे पहले लगा कि वो गलत डिसीजन था जब उसको भेजा इंस्टेड ऑफ सरफराज और एनीवन, hmm, बट इट वाज रियली गुड डिसीजन टू सेंड हिम बिकॉज hmm, वो एक एक्सपीरियंस इंसान है, अपना उसका होम ग्राउंड है, इंडिया में काफी hmm, खेला है, तो इट वाज गुड. रोहित hmm, नीडेड सम स्टेबिलिटी टू प्ले, बट hmm, आफ्टर ही started his 90s, उसको पता नहीं क्या होता है. And it is not Rohit, hmm, sorry, it is not Jadeja alone. There have been many players who just go into a shell or of different thinking after 90s. तो मुझे hmm, लगता था कि this run out was not required because सरफराज का डेब्यू था. जडेजा शुड हैव थोड़ा सेंस के भाई नया बंदा है, मुझे इसको काम कराना है, मुझे इसको hmm, उतना नॉलेज इम्पार्ट करना है. बट अब जो हो गया. द थिंग इज दैट आई थिंक देवांशु वाज ऑल्सो सेइंग कि अब तो उसका एक अच्छा नॉक चाहिए जडेजा का, बिकॉज hmm, 200, एनीथिंग इज काइंड ऑफ नॉट इनफ. या यू नो hmm. एटलीस्ट 200 फ्रॉम जडेजा नाउ। एंड वो Yeah. कैसे आई मारे, थिंक नो आइडिया.
मुझे उससे ज्यादा ये मतलब जडेजा को भेजना तो ठीक था, मुझे कुलदीप को क्यों भेजा मुझे वो अभी नाइट तक वॉचमैन। समझ नाइट में चाइना नहीं मैन। आता, क्योंकि कल सुबह हम्म। नाइट चाइना मैन हाँ तो नाइट मैं चाइना मैन, एक्चुअली मुझे लगता तब है क्या ये होगा कि मनीषा ने वो एक इंटरेस्टिंग इतना स्लो खेलेगा कल सुबह कि पूरा मूवमेंट चला जाएगा। उसके बाद आएंगे ना हमारे अन्ना आएंगे वो खेलेंगे फास्ट। बट मैं मनीषा का पॉइंट एक और लेना चाहता था कि शी सेड अबाउट द रनआउट्स। मुझे लगता है दो तरह के लोग हैं, एक जो बहुत स्लो भागते हैं और एक जो बहुत फास्ट भागते हैं, इनके साथ रनआउट्स का प्रॉब्लम होता है। लाइक वी सॉ इंजमा हैविंग दिस प्रॉब्लम, यू नो, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू रन फास्ट। और यहाँ पे जडेजा ने बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स पे, मतलब एमसीजी में अजिंक्य रहाणे को रन आउट किया, उसके लिए इंडियन फैंस खुशी हो गए थे क्योंकि कोहली को रन आउट करवाया था रहाणे ने उसके एक मैच पहले। बट या आई फेल्ट एमसीजी में वो मैच, अगर वहां पे मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स्ड, बट अदरवाइज इट कुड हैव बीन एन इंडियन लॉस, बट लकीली वो इंडिया जीत गई। फिर उसके बाद ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या को रन आउट कराया, वो भी एक इनडिसीजन था। तो ऐसे बहुत सारे हुए। वॉशिंगटन सुंदर को भी आप शायद बोल रहे थे एक बार ऐसा कुछ हुआ है। और तो नहीं नहीं, माफी आई आज थिंक आई मांगी वाज है। रॉन्ग। माफी आज मांगी है। रीजंस पता है हमको क्यों है। बैकग्राउंड में तो कुछ और ही चल रहा है। बिकॉज पता है वो उसके इतना इमोशनल था ना ये डे सरफराज के लिए। मतलब वी सॉ हिज फादर क्राइंग, वी सॉ हिज फैमिली आउट देयर। इतने साल से सब बोल रहे हैं सरफराज सरफराज। 2019 से मुझे याद आ रहा है कि ये सरफराज का नारा चल रहा है कि भाई इसको डेब्यू दो। फिर बहुत सारे एक्यूजेशंस भी हो रहे थे कि भाई ये डिजर्विंग बंदा है, लेकिन यार एटीट्यूड इसका खराब है, सिलेक्टर्स को उंगली दिखाता है, सो आई इसीलिए मीन नहीं लेते। शिखर, हम्म। पॉइंट है, पॉइंट ये है, किसी भी डेब्यूटेंट के लिए 62 बनाना इज एन अचीवमेंट। बोले लेकिन सरफराज के लिए उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज डाउन आ गई 62 बनाने के कारण। तो दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। तो हम्म। मतलब अब आप सोच रहे हो, अब ठीक है जडेजा ने जो करा, लेकिन हाँ आई हम्म। थिंक द होल प्रॉब्लम इज कि जडेजा गेट्स वेरी स्लो इन या 90s। और या एक्चुअली में अब ये टीम को भी पता लग गया है। आई थिंक टीम हम्म। जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी थोड़े अवेयर रहेंगे सिचुएशन के अंदर कि क्या करना है। एंड हम्म। ऑल्सो अगर इंटेंट होगा ना बैटिंग के अंदर, तो यू विल हम्म। नेवर गेट रन आउट, क्योंकि यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर रन और आप पहुंच जाओगे। हम्म। बट वहां जब आप सिचुएशन इन डिसीजन वाली होगी तो नहीं हो पाएगा। एंड आई गेस हम्म। इट इज व्हाट इट इज, या इट कैन नॉट बी एंड चेंज। जस्ट बट आई जस्ट या होप, I just हम्म। hope Jaddu makes 200 to at least compensate for this. As mere apology will not fly here. It's हम्म। not या done. या हम्म। हम्म। एंड आई एनीवे। थिंक जडेजा के उसी टाइम के अप्रोच के हिसाब से ना, आफ्टर लेट्स से कुलदीप तो मुझे लगता है आउट हो ही जाएगा, मतलब मुझे भरोसा है ही नहीं उस पे। बट आफ्टर दैट शुड इट बी अश्विन और शुड इट बी जुरेल, बिकॉज जुरेल को इतना लेट बेच के कोई पॉइंट भी नहीं है। और शायद जुरेल भी थोड़ा सा इफ नॉट कंप्लीट अग्रेसिव इज नॉट ऑल्सो कंप्लीट डिफेंसिव। तो उसका हम्म। आई थिंक आना बनता भी है। इट ऑल डिपेंड्स के क्या हम्म। चल रहा है Exactly. I think जडेजा का। Manisha picked up a very good point, Shikhar. हम्म। I think Jurel is a Pandora's box. Nobody knows what will happen. Nobody हम्म। knows. हम्म। मतलब ठीक है, will whether he play aggressive, whether he play defensive, हम्म। जैसे अरे पाटीदार आप का लोग पता है खुश कि तो हो थोड़ा ना, जुरेल आ स्टाइलिश गया। एक तो खेलता है। वो सरफराज भरत का से अरे पता है कि आया तो मतलब क्या कैमियो करने आया क्या, मतलब आए खेले थोड़ा सा और क्या करेगा। अश्विन नहीं आके फिर नहीं, आएगा जडेजा आएगा, का ऐसा काम नहीं है करेगा। यार। ऐसा जुरेल क्यों स्कोर्ड 100 इन साउथ अफ्रीका फॉर इंडिया, ये तो ही विल कम, ही विल प्ले, ही विल कम अहेड ऑफ अश्विन। मुझे लगता है ही विल कम अहेड ऑफ होप अश्विन। सो। होप बट सो। yeah, coming to the first session of हाँ play, ऑब्वियसली। Sujal, you said you were watching the first session, so it was some amazing bowling from Mark Wood. What did you think of that spell by Mark Wood? I I I was I I was really impressed because yeah, okay, on that kind of pitch, which was super dry and a lot of cracks, that he was able to, just the pace he was generating, which is what troubled Jaiswal and Shubham Gill, for sure. Hmm. And I felt like there was something that he could have, it was not expected, but there was nothing in it for the fast bowlers. So that he definitely created Hmm. something out of nothing. And Hmm. I think there was some. I think Jaiswal.
the way he lifted his bat, it wasn't, it was difficult. He didn't account for the power. He went far too far back, and then he Hmm. couldn't account for the extra bounce that was generated. And Yeah, then, yeah, true. Absolutely. and I I mean, think, I I think that was a Shubham hit is the kind deck of hot ball and cold. from a very fast bowler, and he should have expected that instead of just nudging at it. And even Shubman Gill, I think it was the same because it was a very good I, delivery, no doubt, but he could have I, avoided. I think, but I think Shubham Gill was a little bit lazy as well, to be honest with Yeah, you. yeah, But I think Jaiswal, it's more of a learning curve. I mean, Shubham Gill has already had 42 innings, right? So it's not like he's a mm, total newbie, and he's batted well in Australia and England, mm, so he's a little bit more experienced, right? So that mm, was a little bit lazy on his part, I think. yeah, I think I think there's I think I'm really concerned for the rest of the series that especially at number 4 and number 5, that is a big kind of red flag. I mean, Sarfaraz Sarfaraz played well, but we still don't know much about him at this level, right? yeah, And I think Patidar is done. I honestly don't think there's anything yeah. there He is. from what I see. I think he got lucky to play this test for first of all. Like he probably should not have been playing. But Manisha, I want to ask you one question now. So मैं एक चीज को लेके I was getting very happy today that maybe Sarfraz and Jurel can close the door on Bharat and KL Rahul. But we all know KL Rahul is a good test batsman, but still, we sometimes miss the aggressive approach from him. And I was kind of hoping that these guys, and that's what really makes me sad about that run out, क्योंकि अगर वहां पे सरफराज आज एक डैडी 100 मार देता और 150 160 कल मार देता और जैसे वो खेल रहा था तो लग भी रहा था कि वो मार देगा और पिच भी अब काफी फ्लैट हो गया है. तो आर यू ऑल्सो डिसअपॉइंटेड फॉर दैट सेम रीजन और No, actually, I'm not I mean, I'm obviously disappointed the way he got out, but हम्म, ये होता है ना, कुछ कुछ प्लेयर्स वो ऐसे ही पूरा लाइक अग्रेसिव खेल लेते हैं और अपनी गलती की वजह से आउट हो जाते हैं. सो हम्म, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द कमेंटेटर हु आई थिंक वाज संजय मांजरेकर दैट टाइम, to the entire people watching, management watching, they know it is हम्म, not Sarfaraz फॉल्ट mistake. या सरफराज शुड नॉट टेक इट लाइक, बिकॉज मैंने उसको देखा है जब वो उसने 50 भी किया, वो थोड़ा सा बहुत ही इमोशनल बंदा है. सो ही शुड हम्म, नॉट लेट दैट इमोशन दिन के, हाँ भाई मैंने जड्डू भैया को कुछ ये कर दिया मेरी वजह से. नो, नथिंग लाइक दैट. जो हो हम्म, गया सो हो गया. ही शुड ट्राई टू प्ले मच बेटर इन सेकेंड इनिंग्स एंड हम्म, लर्न दैट हाउ टू बिल्ड मच मोर रैपो, मच मोर कम्युनिकेशन विद द अदर बैट्समैन. तो उसकी तो हम्म, बिल्कुल गलती नहीं है. सो ही शुड जस्ट मूव अहेड एंड आई एम श्योर आपको बस कंसिस्टेंट होने की देरी है, एंड ही विल बी इंक्लूडेड मोर हम्म, फ्रीक्वेंटली इन द टीम. या बिकॉज ऐसे ही है कि जरूरत है फॉर श्योर. yeah, I definitely. yeah, I got a quick question. What do you think is a competitive score on this track? I think you're gonna have to score at least 450 first innings. See, I think there was some moisture in the first session. That's why the ball was swinging. But now I think it's pretty flat, and the deck is pretty flat. I think anything Mm, which is less than 500 now, the position that India is in, I think they should be able to score 175 runs from here. I mean, but you have to factor in there's a new ball coming in the morning. yeah, there is a new ball coming in the morning, but hopefully Jadeja, because his defensive skills are so good today, he was almost showing off his defensive skills. In that Right. first session where we scored 93 runs. In the second session also we were not so fast. We were just 92 runs, and in the Yeah, third session only we exploded to 140 runs I because missed of the second Sarfaraz. session, so I can't comment on that. I missed because obviously I Yeah, was sleeping, yeah, so I yeah. So couldn't I quite watch the second. to answer your question, I think Jadeja can blunt the new ball, and we need a little bit of luck from maybe Kuldeep playing out some overs and make the conditions good for Jurel coming in because it's a debut for him. And if Jurel and Yeah, Ashwin can just support Jadeja,
I think we can reach Yeah. that at least 450 plus. I mean, if 500 is I, too much to I ask, at least 450 plus. yeah, I think 500 would be an ask with what's left, but I think 450 makes sense. So 450. 450 Yeah, definitely makes yeah. Manisha, what's your prediction for tomorrow? You have already predicted an England win, so I am so bad in prediction, but what I just clearly think is, matlab, other than Duckett and Crawley, I hmm, don't see any spark in any of the English batsmen. I don't know why. I hmm, mean, especially Root, Bairstow, they are to like at their like I mean hmm, downmost moment, and the variation which I do not see in the English bowlers, at least sometimes. I think hmm, Bumrah and Siraj or Ashwin, they can take wickets. They have the ability. And Jadeja, I think someone in the group said hmm, Jadeja once जब भी वो इंजरी से आता है वो मैन ऑफ द मैच hmm. जीत जाता है. तो मुझे लगता है कि uh, anyhow somehow India will win. I feel out of anywhere. I'm not exactly sure on the runs, Yeah. but yeah, 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 England also made one change like Shoaib Bashir. I mean, it yeah, proved well, but I don't know why they lost that control because Shoaib Bashir in the last Test match, में first innings में 38 overs, 140 runs, which was a very good spell. You know, after bowling 38 runs, he gave only 140 runs and also took yeah, yeah, a wicket of Rohit Sharma and one more wicket. So I don't know yeah. why they dropped him. Maybe they wanted to exploit that first session with two Yes, fast bowlers. yes. But I think Root is not is he's not improving as a bowler. The first test mein he was amazing, Horrible. and today he was not good at all. He gave too many free deliveries. Even Jadeja, who was in a defensive mindset, attacked him. Yeah. Straight drives and then short ball he cut it well. And I mean, at least we still, some people can still call him like, part-time bowler, but what about fielding? What about batting? He's doing nothing. hmm. And his No, fielding was, I don't I mean, know. that drop catch really cost because Rohit got lucky with a Exactly. review and Yeah, also with that drop catch. And also there was a review against Jadeja they did not take. So India they got did some not luck take it. also today, which was much needed considering we have an inexperienced side playing this test match. Yeah. Yeah, so I think that's the wrap of the first day and amazing innings from Rohit Sharma. He was laser focused today, and once he got that luck, I think he just wanted to attack today. He pulled a lot of wide balls to mid wicket, which was good to see. And मजा आ गया रोहित शर्मा सरफराज खान sense. दोनों की बैटिंग देख के and Uh, it was a but great attacking innings from Rohit. Yeah, Sujal. it, yeah, एक चीज था कि ये he didn't play signature pull shot, which was kind of odd for him not to play the signature pull shot. He was driving a lot from what I saw. Yeah. He was You driving a lot. He was punishing those deliveries after he got that luck. Initially, he was defensive. Then he started to find his groove, and He's the even best hitter of the spinners. Like he hits spinners so well, so well. I was yeah. like, it was See, really nice to see that him. that yeah, that actually gives us a lot of hope for the third innings because in the third innings, I think the English spinners are not that strong, and I think even if we get around 450, I don't think they're gonna be able to get more than 375, and then third innings, I think we'll just destroy them. I believe that, you know. yeah. Pratik has joined us. Pratik, what's your comment? We have already discussed uh, everything. So, what's your Yeah, comment? You can I wrap think it up was an the excellent day discussion. for Team India. They came back very strongly from 33 for 3. I still Hmm. feel they should not be complacent though, because this is a very good 500 pitch, I feel. So if they are going to get bowled out under 450 tomorrow, then England will be right back into this game. But yeah, what an innings from the captain and Sarfaraz. Yeah, absolutely, absolutely. It was a great day for Indian cricket. I'm happy that with an inexperienced side, we were able to post 326 on day one. Again, just like in Vizag, we posted 336 on day one. This time again, we batted with intent. Even Jadeja, who batted with 50 strike rate, was able to anchor the innings, and team management will be happy with his performance today. And brilliant from Rohit and Sarfaraz, who just went
played brilliant attacking cricket, especially dismissing the line and lengths of the spinners totally. So it was a Yeah. small fight from Mark Wood. He was the only one fighting, I think, from English side. But Yeah, yeah, we have to so give credit to him. Like he gave India early blows, and the way he got Rohit out finally, challenging him with his pull shot and making yeah, him make a mistake. So that was very good play from Mark Wood. And somehow England are still in the game because of his 3 wickets. yeah, Also, you have to say that the Rajkot pitch true nature was shown in the last 2 sessions. Like, yes, yeah. Indian players batted exceptionally well, but it also shows that how good a batting pitch this is. Yeah, and we expected that also from Rajkot pitch. The first morning has little bit of moisture, but after that it flattened out, and India should get 500. I'm expecting good things from Dhruv Jurel, just like Sarfaraz. So let's see how it goes tomorrow. So thanks, guys. Thank you for joining, and uh, thanks Manisha, Pratik, Sujal, Devanshu who joined earlier, and let's hope for a cracking day too at Rajkot. Thank you. Bye Thank bye. Bye. you. Bye.